Okay, so we are all set to start. A very pleasant afternoon to all the participants present here. So, Amrut, are we good to start? Thank you. On the 80th episode of Friday Fleet, an initiative of women empowerment. Today is one of the special episode. Why? Because most of you know the purpose, the intention of starting this platform. We wanted to have a community, a group where we females as a professional where we are not only expected from the people around us but from ourselves as well to excel in personal as well as professional life, and we want to do it all. And today we are having someone on our platform. He is also on a mission. Hold your breath for a couple of minutes. I'll tell you in detail. If you are someone who is not knowing about him, which is very rare. International Women Day is around the corner. We are going to celebrate it and consider this episode towards that empowerment we are actually looking for. My dear community, today we are having on our platform Amrut Deshmukh. He is popularly known as Booklet Guy, who calls himself as an outdated chartered accountant, is on a mission to cultivate the habit of reading amongst the youth of India. Mission Make India Read. He read for India. How does he do that? Well, for that you need to meet him. The average reading speed of most of us is 150 words per minute. Amrut has increased his reading speed to 1200 words per minute. Wow. He reads almost one book a day and has read 1853 books till now. Today, he has 50 lakh young readers who are enthusiastically reading books with him on his free mobile app called Booklet. He is TED Talk speaker not only once, twice, but thrice. He is awarded as Youth Icon 2020, author of The Seven Habits of Highly Effective Readers. And if I want to introduce him completely, I think today's session will fall short. So, without taking your much time, because all of us, including me, are here to listen from Amrut about one of the strong female leader, Indra Nooyi. And one announcement that I would like to make that Amrut has mentioned at the start, that any question that pops up into your mind, you can ask in between the session. Right, Amrut? Yeah. Yes. So with that, I would like to hand over the virtual stage to our today's esteemed speaker who have not taken a bit of moment to accept our invitation to grace this platform with his presence and his wisdom. Over to you, Amrut. Thank you so much for accepting our invitation. A big round of applause for Amrut. Thank you. Thank you so much, Kalpana. I got so excited when you invited me for such a unique session. 8th of March is around, around the corner, International Women's Day. And quickly, Indra Nooyi came to my mind because she's my personal hero when it comes to the corporate world, and not just because she thrived in the corporate world, but the way she has handled her entire life, family, and work life. So, I've also taken some good learnings from other books like Sheryl Sandberg, the ex-CEO of Facebook. She has written a wonderful book called Lean In, and there are some lessons worth to be learned from her as well. There are some great people like Sudha Murthy is one of them. So Sudha Murthy, Sheryl Sandberg, Indra Nooyi. I think these are the ideals. I would say ideals who have cracked the the formula of work-life balance. Although they don't believe in work-life balance, I'll come to that point later. All right. So the most important point that Indra insists is
Uh, the importance of flexible hours. Go and try to convince your management, your bosses for flexible hours. Flexible hours is the superpower of the 21st century, especially for women. It gives so much of freedom. Now when it comes to flexible hours means it could be the hybrid model of not requiring to go to office every day, but you can work from home, and then for a few important things you can go to office, travel to office. But then, to convince your management or your bosses to have flexible hours is not that easy. You have to become the linchpin of the organization. The word linchpin comes from linchpin मतलब जो बैलगाड़ी होती है ना, उसके जो व्हील है उसके बीच में जो एक पिन डालते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज linchpin. So it is the most important part of the bullock cart. अगर वो पिन निकालेंगे, everything will collapse. Even the bulls will become helpless. Yeah. So rather you have to become the linchpin of the organization. Indispensable, irreplaceable person. Okay. The amount of value that you will be adding to the organization should be incomparable. Okay, that and it's not about sheer hard work, but smart work using AI tools, whatever it is. The fact that you guys are child accountant, that assures that you have that basic level of aptitude. Come on, let's accept this. So usme to stand out in the organization and become the linchpin is very important, and then you will be in a dominating position to ask for flexible hours, right? So I really think this will make a lot of difference, okay? Because उसी टाइम पे घर से बाहर जाना और फिर लेट रात को आना is not directly proportionate to your productivity. See, what organizations want or should want is productivity and not time or number of hours put in, right? Your pay scale, your promotion should be based on not place and time. आप कहाँ से काम कर रहे हो? Come on, we guys are knowledge workers. We are not plumbers and कंस्ट्रक्शन पे मजदूरी करने वाले को उनका मैं समझ सकता हूँ. टाइम एंड प्लेस इज इम्पोर्टेंट. फॉर अस नॉलेज वर्कर्स, time and place is not that important except for few things. Right now I am sitting in Thane, Kalpana is somewhere else, Ashwini is somewhere else, and we are meeting together. So I think the pay scale, promotion, hierarchical progress, they all should be dependent on productivity and not time or the number of hours put in or the place from which you are working. Yeah, and that is what I call as flexibility. Flexible hours is the superpower of the corporate mother, I would say, if there is such term called corporate mother, although sounds like an oxymoron, but we should not let it remain as an oxymoron. Okay, she is a mother and very active in the corporate world. Yeah. So please remember that keep trying to convince your management for flexible hours. Okay. उससे आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी. And मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंदिरा नूई has been again and again saying in her book. Okay. And that's for that you have to become the linchpin. Uh, Now, how to become an indispensable is by no. There is one line every boss would like to hear from his employees. एक ऐसी line है, and rarely nobody says it, be it women or men or women. Can you give me more responsibilities? ये लाइन सुनने के लिए एवरी बॉस, हर बॉस तरसता है कि मेरे नीचे जो भी काम करे ना, he should say this line, can you give me more responsibilities? If you are the boss, wouldn't you love if somebody says that, give me something where I can take some initiatives, want to take some more responsibilities? हम ऐसा कभी बोलते नहीं. But I think that is the differentiator. Okay. बट अभी आप बोलोगे ऑलरेडी हमारे पास इतने रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहते, तो अमृत हमको और तो ये बोलने को जा रहा है, वेयर वुमन, इंडियन वुमन इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड एन ऑफिस एंड बहुत सारी चीजें मैनेज करने हैं, और उसमें तू बोलता है कि बॉस को बोलो गिव मी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो आई एम सेइंग दिस लाइन विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हमको लगता है कि see, I've seen many women and Sheryl Sandberg has noted this कि बहुत बार ना women give up the opportunity of promotion
they opt not to climb the corporate ladder because वहां पे ज्यादा responsibilities आएंगे and then I'll not be able to do justice at home for my family, for my children and husband. Yeah. And it was very shocking to me that Fortune 500 companies may less than 4% of CEOs were women. It's a very shocking figure. Less than 4% of the Fortune 500 companies have a female CEO. Very shocking, right? In 2026, where we are talking about equality and no gender bias and whatnot. This is still the reality. Very shocking. But then we have solutions to it. What are the problems? Why these statistics? Uh, a beautiful line. We all know that it takes a village to raise a child. It takes a village to raise a child. सब कुछ कहाँ होता है जब बच्चे होते हैं. When a couple gives birth to a child, everything for the woman changes. Yeah, most of the time career goes for a toss, and वहां पे हमको creatively solutions लेके आने हैं. Okay, that it takes a village to raise a child. Now it is not just the responsibility of the mother as a caregiver. Okay, husbands have to come into the picture. They are equally responsible. Okay, ठीक है. Except I would say the natural things that husband can't. वो दूध तो नहीं पिला सकता है, breast feeding तो नहीं कर सकता. Except that job, everything else is possible for the husband. And I think the urban modern husbands are gradually understood the importance of caregiving to the child और वो होना चाहिए. And इसमें भी इंदिरा नोई calls herself very lucky कि इसमें actually the it takes a village to raise a child. ये उसके उसके मामले में ये सही था. That literally जब she had two daughters, I guess, Tara and Preetha. Yeah, Tara and Preetha, her two daughters. And उसके in-laws used to go to US turn by turn. उसकी सास US जाके रहती थी to take care of the child. उसके बाद उसकी माँ जाती थी, फिर उसके ससुराल वाले, they all were taking turns. See, distributing the responsibilities makes things so easy. Now, hats off to the entire family. Okay, that and Indra Nooyi gives full credit to the entire family. कि उन सबके support की वजह से Indra Nooyi is where she was. But she's dead now, I think. But the CEO of PepsiCo is like one of the biggest companies in the world. और उसकी CEO बनना with and a mother of two, and husband is also working. So I think this is impossible, she says, without complete family support, not just husband support. यहाँ पे the in-laws also were have contributed a big time, and her mother also contributed a big time. Yeah, so this is something commendable. Uh, So, Amrut, if you allow, I'm having a question related to the, if I can ask. sure, go ahead. Yeah, Yeah, so as chartered accountant, most of us are into practice, right? If I take my example, in the year 2019, I've left my corporate job and then I've joined practice, my husband's practice, and majority of the time it's work from home, taking care of the kids, taking care of the work. And at that point of time, there is no boundary line between the hours, office hours, and the personal life. The 24 hours is kind of a work is in our mind. So, what is there something yeah, here in the discussion related to yeah. that? I think the concept of work from home came to us quite suddenly, thanks to COVID. We do not understand the science and art of working from home. When your home becomes office, we don't know the rules. The rules completely change, right? Now, yes, we get a lot of freedom, flexible hours. Congratulations, you all are enjoying the flexible hours. But with that comes too much of autonomy, too much of freedom, and then too much of accountability. Sometimes people think working from home is more difficult than working from office because now you have to you are accountable so much to that. So यहाँ पे not just psychologically but physically, if we could make the family members understand that once I enter the room,
जहाँ पे आप डेस्क जिस डेस्क पे आप काम करते हो, या इफ यू हैव अ सेपरेट रूम, देन ट्रीट इट एज ऑफिस, कि मैं चली गई हूँ ऑफिस, ऑफिस चली गई। लिटरली जब मैं पहले जाती थी ऑफिस, या नो, बार 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 करना पड़ेगा, ये एक दिन में नहीं होगा, बट दिस इज अ सॉल्यूशन। सो देयर इज अ बुक कॉल्ड वर्क फ्रॉम होम, सो इट टॉक्स अबाउट, देयर इज अ बुक कॉल्ड वर्क फ्रॉम होम। आई रियली लव that somebody thought of writing a book, because it's a perfect, it was a need of the hour during after the COVID happened. So मेरा मेरा खुद का ऑफिस था घर पे for many years. So I used to make myself believe that once I step out from that room to that another room, now मैं वापस भी घर पे किचन में भी नहीं जाऊंगा, मुझे सब कैरी करके जाना है। मेरा पानी, दिन भर का पानी, so I used to carry 2 liters of bottles and मेरा डब्बा, so assuming that I don't have access to home again, itna. Now this is extreme, you need not do that, you can go back to the kitchen, but it is very important for the family members to believe this. नहीं तो you are available 24/7, फिर वो पंखा फास्ट नहीं हो रहा है तो आपकी सास बुलाएगी, ये पंखा फास्ट क्यों नहीं हो रहा है, एसी का रिमोट कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, यू ऑल आर फेसिंग दिस, राइट? सो वहाँ पे हाउ ओपन माइंडेड दे आर इज ऑफ कोर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बट देन द बेस्ट पॉसिबल वे इफ यू कुड मेक देम अंडरस्टैंड that office may interruptions is not only reducing your productivity in office, but it is also affecting your mental balance. तो ये एक आप तरीका कर सकते हो कि उस रूम को ऑफिस बनाओ एंड थिंक दैट इट इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम फ्रॉम योर लिविंग रूम, फ्रॉम योर किचन। थिंक, आई नो वी आर नॉट अंबानीज, जहाँ पे अंबानी कैन एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम वन रूम टू अनदर, जहाँ पे वो रूम का वाईफाई भी यहाँ पे नहीं आएगा। यू कैन यूज द वाईफाई, ओके, बाय द वे, वाईफाई कैन बी यूज्ड कॉमनली throughout the rooms. You can try this out. I'm not saying this could be a 100% solution, but discuss with your family members. Okay. And then Thank I you. think I'm sure आदत हो जाएगी कि no, no, Kalpana is not available for me from 10 to 5 or whatever it is. उसकी आदत हो जाएगी. Yeah. All right. Yeah. So, yeah, what Indra Nooyi interestingly said is that हम लोग क्या करते हैं, हम टू डू लिस्ट है ना अलग अलग बनाते हैं, ऑफिस का टू डू लिस्ट अलग, घर का टू डू लिस्ट अलग। सी वंस यू आर इन अ लीडरशिप पोजीशन, आई बिलीव यू ऑल आर practicing chartered accountants or at a managerial level, then you need not bifurcate your घर के activities and office के activities. It can be one whole list, because you are one integral person, you have one brain, one body. So the categorizing your activities, like this is my work activity, this is my social life, this is my personal life, this is my parent life. No, activity is activity. You don't have to bifurcate all the jobs into different buckets. And so you should take full advantage of your. Now, Indra Nooyi had a personal assistant. She used to, delegate even her child's task to her. You need not shy away to tell your personal things to your office colleagues, but for that you'll have to tell them why you are delegating that job as well. The fantastic example was जब इंदिरा नोई की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उसको उसकी बेटी को पिकअप करना था स्कूल से, and that time she was the vice president of PepsiCo, I believe. तो उसके सीईओ, the CEO of PepsiCo, Mr. Raymond, Steve Raymond, he went to her school and picked her daughter. Can you believe? So there could be good, really empathetic men who understand the problems. I'm sure the way Indra Nooyi must have told her, that made him, वरना मर्दों को इतनी अकल नहीं है कि they could, stand in your shoes and understand and empathize your situation. नहीं है. I trust me, it is नहीं, unless you tell them, okay, with passionately, this is very important for me right now. Could you please help me? There is no problem. You, of course, you might get some sarcastic response also. But there is no harm in telling. I'll give you my personal example. जब ये पढ़ने के बाद मुझे मेरा personal example याद है. So like I exercise like with 5-6 friends on the terrace every morning. हमें 2-3 लड़के और 2-3 लड़कियां हैं.
तो मेरी फ्रेंड है जो रेगुलरली मेरे साथ वर्कआउट करती है, एंड all of a sudden she said, I'm not coming tomorrow for the workout. Huh? And then I said, okay, what's the problem? So वो बोले कि नहीं, I have periods, so I'm not coming. I said, oh fine, that's so अभी ये इतना normal हो गया है आज, talking about, no no, I'm having it's my cycle, periods है तो मैं 2-3 दिन नहीं आऊंगी. Yeah. Now बैक गो बैकवर्ड्स 10 years ago, जब मेरी फ्रेंड कुछ मेरे को बोलती थी कि अरे मैं नहीं आ सकती कल, मतलब क्यों, नहीं पेट पेट दर्द कर रहा है मेरा, तो हमको मर्दों को समझ भी नहीं आएगा, क्लिक को हमको पीरियड्स नहीं आते भाई, इट इज यू हैव टू टेल स्पेसिफिकली. एंड तो मैं बोला था अच्छा पेट में दर्द हो रहा है तो फिर हाजमोला लो, इनो लो, ठीक हो जाओगे, आ जाओ कॉलेज. And conversation used to go somewhere else. But now when she directly said कि मेरे periods है मैं कल workout के लिए नहीं आऊंगी, and then interestingly the conversation took became so productive, we started finding YouTube videos where exercise या yoga ऐसे कर सकते हैं even during periods. See, so openness से क्या क्या फायदे हो सकते हैं. So please don't shy away. No, I think at least the urban men have become very broad-minded and acceptable because it is part of the nature. I think it's a gift. And ये से इनडायरेक्टली अगर बातें करें ना मधु को समझेगा ही नहीं. ट्रस्ट मी. डोंट एक्सपेक्ट देम टू रीड बिटवीन द लाइंस. दे लेवल. अब जो बोलोगे वो फेस वैल्यू पे लेंगे वो. डोंट एक्सपेक्ट किया है ऐसा मैं बोलूंगी तो उसको समझ में आ जाएगा. नो नेवर. Uh, yeah, so the very interesting incident which went viral in form of video. Indira Nooyi की interview थी. It is also mentioned in the book. So एक बार क्या हुआ? Indira Nooyi got promoted as the president of. The president is like just below CEO होता है. And she have got promoted as the president, and she was so happy to share this news. She was coming back home, और जैसे ही ने एंटर किया तो उसकी माँ थी वो जो इंडिया से आई थी टू टेक केयर ऑफ हर डॉटर. और जैसे ही शी वॉज अबाउट टू शेयर द गुड न्यूज ऑफ हर प्रमोशन, उसकी माँ बोली कि अरे जा नीचे जाके जल्दी दूध दूध लेके आ. एंड इंदिरा नूई सेड, माँ क्या है, मैं तुमको कुछ बताने वाली थी, आई एम गोइंग टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पेप्सिको, और तुम मुझे नीचे 10 रुपए का 20 रुपए 40 रुपए का दूध लेकर लेने वाले को बोल रही हो. एंड द आंसर दैट शी गेव इज दैट keep the crown in the garage. It's a very famous phrase that came from her words. कि जो भी तुम हो, बड़े हो अब वो घर के बाहर रख के आओ, अंदर आने के बाद तुम एक बहू हो, तुम एक माँ हो, तुम एक पत्नी हो. एंड देन यहाँ पे ना बहुत लोगों ने वीडियो को एडिट किया, बट एक्चुअली इससे बड़ा वीडियो, द रियल मैसेज दैट इंदिरा वांटेड टू गिव वाज आफ्टर दैट. यू कैन गो टू गूगल एंड चेक. बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे रुक जाते हैं, बट एक्चुअली व्हाट इंदिरा वांटेड टू गिव द मैसेज इज, शी सेड टू हर मदर, क्या तुम ये सेम चीज तुम्हारे दामाद को बोलोगे क्या? मर्दों के लिए यही होता है, टू कीप द क्राउन आउट. ही कम्स विथ हिज ऑल द ईगो, मैं सीईओ हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, मेरे बाइसेप्स है, मेरे पावर है, यू नो विच इज एक्सेप्टेड. Men are traditionally supposed to be the representatives of power, yeah, and they carry the power at home, yeah, because he's a famous actor, because he's a billionaire in office, he acts accordingly at home. He should also drop his crown in the garage and then enter the house. मर्द को कोई बोलता नहीं कि वो तू तेरा सीईओ वगैरह, बाहर घर आने के बाद तू एक बाप है और तू एक पति है, ये नहीं बोला जाता है, right? So this was the big message, and I really I'm glad कि उसने ये इतना boldly बोला है. Please go watch this video on YouTube. और काफी लोगों ने वो एडिट किया था लास्ट वाला, तो वो मर्दों ने किया होगा edit. Okay. Uh, yeah. So whenever start sharing your daily problems, की suppose आप लेट आए तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ हाँ सॉरी यार मैं कल मैं लेट आऊंगी. एंड देन पीपल डोंट गिव द रीजन व्हाई. वो रीजन क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट टेलिंग द रीजन व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट.
कि नहीं, वो कल ना क्या हुआ, मेरे को अचानक से मेरे बच्चे के स्कूल से कॉल आया, और अचानक से उन्होंने कल मीटिंग रखी है, तो कल मैं थोड़ा 1 घंटा ऑफिस लेट आऊंगी। तो पीपल शाय अवे टू टेल द पर्सनल रीजंस, हम बोलते कि नहीं नहीं, घर के काम है थोड़े, इसलिए मैं लेट आऊंगी। नो, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। Okay, if the leadership is open minded or your client is really open minded, they will understand your problem. अगर मीटिंग कैंसिल करने की नौबत आ रही है, मीटिंग को लेट हो रहा है 1 घंटा, टेल ऑनेस्टली जो प्रॉब्लम है बताओ। वो घर का है इसलिए उसको छुपाने की कोशिश मत करो। एवरीबडी हैज हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स नहीं बोलेंगे, जो भी है ना। होता है ना ऐसा कई बार कि सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अभी वर्क फ्रॉम होम है, और तभी आपका बच्चा नो फुटबॉल खेल के पैर तोड़ के आता है और फ्रैक्चर लेके, तभी क्या करेंगे? यू हैव टू से, यू हैव टू प्रायोरिटाइज, ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर चाइल्ड। उस वक्त आपको ये बोलना जरूरी है कि भाई मेरे लड़के का पैर फ्रैक्चर हो गया, मुझे लेके जाना पड़ेगा। बट हम लोग क्या करते हैं, उसको आधा अधूरा इंफॉर्मेशन देते हैं कि नो, क्या अनअवॉइडेबल रीजन, हाँ, डोंट एवर से देयर इज एन अनअवॉइडेबल रीजन दैट हैज कम अप, दैट्स व्हाई आई कांट कम टू द मीटिंग। तो मैसेज क्या जाता है, अच्छा मतलब मीटिंग इज अवॉइडेबल, राइट? समथिंग अनअवॉइडेबल, मीटिंग इज अवॉइडेबल, आई एम अवॉइडेबल, ऐसा नहीं बोलना। गिव द रीजन, स्पेसिफिक रीजन, इवन इफ इट्स अ स्टूपिड रीजन, यू हैव टू गिव इट। या इनफैक्ट मेरे मामले में एक बार ऐसा हुआ था, एंड सी द पावर ऑफ ऑनेस्टी। मेरे पास एक इंटर्न थी, एंड कुछ उस दिन जल्दी आना था हमको ऑफिस, और फिर कहीं जाना था, एंड शी केम लेट, सो आई सेड अभी आज ही हमको जल्दी आना था, व्हाई आर यू लेट? व्हाट शी सेड, मैं कल रात को नेटफ्लिक्स मूवी देख रही थी और इसलिए लेट सोई, तो मैं लेट उठी। आई लव द ऑनेस्ट आंसर। ऑफ कोर्स ये गलती है, बट द अमाउंट ऑफ ऑनेस्टी व्हिच आई सॉ इन हर, कि ये बोलने के लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए कि कल मैं रात को जल्दी सो सकती थी, पर वो देखते गई, वो मूवी अच्छी थी तो मैं देखते गई, तो पता नहीं चला कब 12 बज गए। नाउ दिस इज सो कॉमन, राइट? सो आई अप्रिशिएटेड कि वाओ, नाउ लेट्स वर्क ऑन इट। अगली टाइम ऐसा ना हो तो क्या करेंगे? कैन वी मेक आवरसेल्फ अकाउंटेबल टू ईच अदर टू गो टू बेड बाय 10-10:30 एट नाइट? या फिर कुछ ग्रुप बनाते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। नाउ सी, व्हेन ऑनेस्टी से कितने कितने अच्छा प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन हुआ हमारे में। ओके, सो या delegation. I think Ashwini just asked about it. Too many things on the plate. You know, पति के भी डिमांड्स है, बच्चों के डिमांड्स है, सास ससुर के डिमांड्स है, और फिर 31 मार्च आ रहा है, या टैक्स ऑडिट का डेट अभी पास आ रहा है, तो बहुत सारे, एंड देन यू फील ओवरवेल्म्ड एंड बर्नड आउट। सी, delegation is an art. Delegation means trusting the other person that he or she is as good as I am. बहुत बार मैंने देखा है ना कि एक बार वंस वी गेन एक्सपर्टीज इन वन थिंग, वी थिंक कि अभी हम 30 मार्क खाने हैं, अभी अभी हमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, एंड वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डेलीगेट इट। ट्रू डेलीगेशन इज transferring the responsibility to the other person and not just the job. Responsibility. Okay, let that person make the mistake, and then you enter and rectify that mistake. Allow that person to rectify, to commit a mistake. उससे ही वो, क्योंकि हमने वो मिस्टेक 10 साल पहले की होती है, पर वो हम भूल जाते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट। यू गेट माय पॉइंट? सो डेलीगेशन टेक्स लॉट ऑफ करेज एंड ट्रस्टिंग द अदर पर्सन, जो आमतौर पे हम करते नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, राइट? सो यहाँ पे आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर आर सो मेनी आइटम्स ऑन योर टू डू लिस्ट, दैट एक बार वो लिस्ट बन गई, अब इसमें से मैं व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन एलिमिनेट और डेलीगेट रूथलेसली। इसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैंने पढ़ा इन द बुक कॉल्ड गर्ल वॉश योर फेस। बुकलेट में भी है, गर्ल वॉश योर फेस, इट्स अबाउट वुमेन वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉब्लम, द sacrifice cycle. We talk about work-life balance. Even Indira Nooyi says there is, forget work-life balance. You will never be able to balance work and life. So there is something called sacrifice cycle. What is sacrifice cycle is कि एक एक हफ्ता लो और बोलो कि ये हफ्ते में मैं
ये वाला रोल थोड़ा सैक्रिफाइस करूंगी. आई मीन आई विल नॉट बी परफेक्ट, maybe a perfect wife this week. Okay, and of course I'll communicate it to my husband कि ये हफ्ता I'm prioritizing something else, maybe kids, so you will get ignored. Upfront बोलना है एक हफ्ते के लिए. This is how you can cycle each week ki this week is for kids, so I will prioritizing kids. That doesn't mean I'm not going to work, that doesn't mean I'm not going to go to office, that doesn't mean that I'm not going to talk to my husband, but I'll be prioritizing kids this week. Then next week I'll be prioritizing my work. So that week you will be less of a mother and less of a husband and more of a chartered accountant practicing that. The next week you will be sacrificing, say, in-laws time. In-laws will get ignored. You know, ये बहुत interesting concept मुझे लगा. The sacrifice cycle, where you plan what not what will not get priority from you for that for these people. It's about people. आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं उनको अपफ्रंट अगर कम्युनिकेट किया जाएगा कि दिस वीक कल्पना इज नॉट गोइंग टू गिव मी प्रायोरिटी. I'm okay. Now my expectations are set clearly. I'm not going to expect much things from Kalpana this week. Very interesting. क्यों क्लैरिटी कितनी है कम्युनिकेशन में, ये आप ट्राई करके देख सकते हो. अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एकदम 100% काम करेंगे. दे कैन बैकफायर ऑल्सो, बट अगेन लाइफ इज वर्क इन प्रोग्रेस. लाइफ इज लाइक ऑलवेज इन बीटा मोड. यू आर ऑलवेज इन बीटा मोड. देयर इज नो, you don't become a product ready to ship. Okay, work in progress. तो परफेक्शन नहीं हासिल करना है, यू ऑलवेज बी वर्क इन प्रोग्रेस. ओके, सो डेलीगेशन की बात कर रहा था मैं कि नो. Sorry to interrupt. You have mentioned related to this sacrifice. You have mentioned a book. गर्ल What? वॉश योर फेस. गर्ल वॉश योर फेस. Thank you. नीडलेस टू मेंशन जितने भी बुक्स के मैं नाम ले रहा हूँ दे हैव बीन समराइज्ड इन बुकलेट ऐप. And by the way, I've also started sharing book summaries on WhatsApp now. Again, every day I share. So thanks for reminding me, Kalpana. So all of you who are watching me, I share book summaries on WhatsApp also. I thought that why should I keep it preserved in booklet app, and booklet app is तो free. तो why am I restricting it? मुझे लगा कि ये मेरा ईगो है कि मैं मेरी आवाज और मेरी मेहनत है तो मैं बुकलेट ऐप में रख रहा हूँ. नो, यू ओपन व्हाट्सएप 10 times मोर देन बुकलेट ऐप. बुकलेट ऐप हफ्ते में एक बार खुलता है, तो व्हाट्सएप तो दिन में 20 बार खुलता है. So if I'm a truly social entrepreneur, I'm on mission make India read, I have to open up all the book summaries that I've recorded in my voice. So you can note down my WhatsApp number, guys. 9594. Kalpan, if you could write it in the chat on my behalf. It's 9594 700 77. 9594 700 This is my WhatsApp. Just write to me community. So I formed a community where I share book summary every day. Every day a summary gets shared. Okay. और अभी it's Women's Day is approaching, so मैं ये वाले books अभी करूँगा. इंदिरा नूई करूँगा, Girl Wash Your Face, Lean In, Wise and Otherwise, Sudha Murthy's Wise and Otherwise book. She has shared her struggle. She was the only woman in the college, only girl in the college, the first woman who opted for engineering. Can you imagine? पूरे कॉलेज में सिर्फ लड़के, और इस औरत ने हिम्मत की उस जमाने में इंजीनियरिंग करने की. तो पूरी की पूरी स्टोरी मैंने रिकॉर्ड की है मेरे आवाज में. वो जल्दी मैं गूगल देख या उसके आसपास वो रिलीज करूंगा व्हाट्सएप पे. Just join that community. Write to me as I want to join the community, and I'll let you join. All right. So then we also says that paid leave for maternity and paternity, at least minimum 12 weeks का एक norm होना चाहिए in the corporate world. कि paid leave, of course, not for you who are independent and practicing chartered accountants, but for people who are going for job. So four things Indira Nooyi says is the need of the hour: flexible hours, predictable schedule. Yeah, what an important point. मैंने बहुत देखे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैरिड कपल्स विद किड्स, आजकल स्कूल स्कूल वालों के इतने अनप्रेडिक्टेबल टाइम टेबल रहता है ना
मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अचानक से बोलते हैं कि कल तुमको स्कूल आना है, मीटिंग है बच्चों का, ये अचानक से बोलते हैं ये प्रोजेक्ट है, आपको ये दिवाली ये बना बना के लेके आना है। और फिर बेचारे वहाँ रात को 12 बजे तक वो प्रोजेक्ट में हेल्प करते रहते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं। नो, आई थिंक ऑल द पेरेंट्स शुड कम टुगेदर एंड tell the authorities of the school that everything has to be planned 1 week prior. एक हफ्ता पहले हमको बताओ कि ये दिन आपको आना है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू अपफ्रंट से नो आई कांट अटेंड द मीटिंग, यू कैरी द गिल्ट कि मैं बच्चे के साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। बाकी के पेरेंट्स तो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कितनी बुरी माँ हूँ या मैं कितना बुरा बाप हूँ, ऐसा गिल्ट तो कैरी करोगे ना। हमारे बच्चे हैं। सो ये जो 11th आवर के जो आता है ना नोटिस स्कूल से, इज वेरी रॉन्ग। और ये बहुत मैंने देखा है आजकल के स्कूल्स में, ये बहुत होता है। Yeah, because of mismanagement at the management level in the school. So I think in the next parent teachers meeting, no, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो all the parents should come together and make a rule for the school that whatever are the demands, whether the parent has to come to the school या जो भी प्रोजेक्ट करने हैं बच्चों के साथ, it should be planned 1 week prior so that we can plan our calendar and then leave some room for these things for our good for school वगैरह for the meetings. Yeah, very interesting point because वहाँ पे हमको लगता है कि हम हेल्पलेस है। अरे बच्चों के स्कूल से तो आ रहा है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, एंड देन थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल, राइट। तो Amrut, Reeti is having a question. She has raised her hand. यस If you यस, permit. या Yes, रीता, या रीति यू कैन अनम्यूट sure. एंड सर आपने एक किताब बताई थी क्रेजी स्कूल्स, उसका टाइटल क्या था? क्रिएटिव स्कूल्स। थैंक यू। क्रिएटिव स्कूल्स, या या क्रिएटिव स्कूल्स इज अगेन या वेरी इंटरेस्टिंग बुक, वो भी मैंने समराइज की है बुकलेट में। Yeah. So, paid leave, predictable schedule, especially when you have kids, तो स्कूल के शेड्यूल्स एकदम प्रेडिक्टेबल होने चाहिए। इवन ऑफिस के मीटिंग्स, या अचानक से 1 घंटे में तुमको आना है मीटिंग में वगैरह, नॉट अलाउड। या टू सी अपफ्रंट टू योर क्लाइंट्स ऑल्सो। गया जमाना जहां पे द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, नो, हु सेज द कस्टमर इज ऑलवेज राइट? I've read this book called Unposted Letter by T.T. Rangarajan. We talk about hire and fire policy कि चलो कोई बंदा हमने हायर किया और he is not adding value, he is toxic, no, he is unproductive, we fire him or her. Then why don't we talk about firing a client, firing a customer? या अगर वो कस्टमर टॉक्सिक है, मतलब बिजनेस दे रहा है चवन्नी का और दिमाग चाट रहा है 10 रुपया का, फायर हिम। फायर लिटरली ऐसे होते हैं क्लाइंट्स जो इतने इतने कंजूस होते हैं, एक तो उनका कुछ इनकम भी नहीं होता और उनके रिटर्न फाइल करने के लिए इतना दिमाग खाते हैं वो। या फायर सच क्लाइंट्स। क्योंकि क्या होता है, हम सिर्फ नंबर्स देखते हैं, हमको पैसा दिखते हैं, उसके आगे में जो पीस ऑफ माइंड वो लेके जाता है क्लाइंट हमारा, और फिर वो गुस्सा हम लेके बच्चों पे लाद देते हैं या पति पे लाद देते हैं। दिस आर द थिंग्स हम देखते नहीं कि सोर्स क्या है। वो सोर्स को ही निकाल दो ना। 80-20 रूल, focus 80% of your energy on those good sensible client, 20% of the clients, या बाकी सबको आप निकाल दो। या ज्योति, you raise your hand, ज्योति wanted to say something. Jyoti, you want to say something? Yes, yes. One thing you mentioned about delegation of work, or you may say responsibility, correct? Yeah. But I would add on this that even you have delegated the responsibility, you should have the plan B alongside with you. Because the person to whom you have delegated the work, he or she might have the same problems what we are facing. So the plan B backup should be always there. Yes, you're right. This is my personal experience, so I thought to share it. Yeah. If the cook doesn't show up, Because always thinking that I have given them responsibility and I have no work to do. Never. It is never there. Your responsibility will be your only. So be prepared for the plan B always. correct. नहीं Yeah, नहीं Jyoti, you're absolutely right. Your point, I take it as it is, that there is no 100% delegation. ऐसा होता ही नहीं है. Yes. Okay, the point that I was emphasizing is we sometimes disguise. Hesitate to delegate. हाँ, Yes, we हाँ, think that
हमारे बच्चों का वो काम अच्छा नहीं होगा अगर हम डेलीगेट करेंगे तो. Correct. We really think about it, but just to add it, because something we only think, okay, we have delegated, now we are free. No, never. Correct. जो हमारा काम है वो हमारा रहेगा ही, वो नहीं जाता है. Correct. So this is the difference between कर्म and कार्य. तो आपको जो डेलीगेटी है, जिसको आपने डेलीगेट, वो कार्य करेगा. कर्म तो आपको करना है, मतलब अल्टीमेट अंजाम देना है, हमको देना है, राइट? सपोज टुडे द कुक डजंट शो अप, ऑब्वियसली यू हैव टू एंटर द किचन एंड टेक द रिस्पांसिबिलिटी. जी, उसने तो हाथ खड़े कर दे कि मैं तो बीमार हो गई, राइट? आज ऐसा ही हुआ मेरे साथ में. माय कुक डिडंट शो अप टुडे, so I have to take the charge and do everything. Somebody, okay, thanks Jyoti, very good, you can mute yourself, good point. Yeah. Okay, Riti, you can also mute yourself. There's some slight disturbance from your side. Yeah, thanks. All right, I think the discussion is getting very interesting. Even I am getting excited because it's a very different topic and very difficult topic for me as a man, yeah, to discuss. Yeah, because I honestly I feel privileged that I am born as a man because I know कि क्या क्या किस किस चीजों से गुजरना पड़ता है ना. So one of my privileges that I always think myself when I'm alone is that I'm born as a man and I have to take it as a responsibility that it's a privilege for me. Okay, so yeah, I hope अगले जन्म अगर मुझे औरत का जन्म मिलता तो I will understand it in a better way through these books. Okay. Flexibility. Yeah. The third thing, apart from paid leave and predictable schedule, Indira Nooyi focuses on childcare system. No, the corporate world has, and we all, the men and women, all should think of a proper childcare system which actually gives results. नाम के लिए नहीं कि बस एक आया है, एक केयर टेकर है या क्रश में बच्चे को डाल दिया. नो, a proper system होना चाहिए, and for that we should have dedicated, dedicated people or department who can develop a childcare system. Okay, and once a child is born in the family, ये तो खत्म होनी चाहिए बात कि नाउ इट इज द मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है ना जब बच्चा हंसता रहता है तो सब बोलते हैं ये मेरा बच्चा मेरा बच्चा, जब रोने लगता है तो ये माँ ले ले बच्चे को. दिस वेरी बैड अप्रोच. या मैंने देखा है, मैंने इन लॉज को भी देखा है ऐसा कुछ. बच्चा रोने लगता है तो अरे जा जा ये ले रे, बहू को बोलते हैं ले ले बच्चे को. नहीं, अगर हंसते हुए बच्चा चाहिए तो वो रोते वक्त भी आपको ही संभालना पड़ेगा. Yeah, when I talked about flexibility, we spoke about that productivity and not just time and place. I would like to repeat this point. Ki now we should only focus on productivity, results, and not the number of hours put in. या कितना वो जो log in time and log out time अगर वो सब नहीं होना चाहिए. Gradually things are changing now at really good companies. So time and place are not given importance. In fact, मैं भी बुकलेट में धीरे धीरे ये ये आइडिया लाने वाला हूँ कि हम रोज मिलना जरूरी नहीं है हमको. या यू वर्क फ्रॉम होम, यू वर्क फ्रॉम ऑफिस, यू वर्क फ्रॉम माथेरान, आई डोंट केयर. ओके, पर एज लॉन्ग एज यू आर प्रोडक्टिव. फिर आपने 2 घंटा काम किया है, 10 घंटा काम किया, आई डोंट केयर. या सो ऑफ कोर्स दिस पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ नॉलेज वर्कर्स. जहाँ पे व्हाट इज नॉलेज वर्कर या नॉलेज वर्क, where it is more about processing the knowledge, like जैसे अभी आपके केस में ट्रांसफर प्राइसिंग है, टैक्सेशन है, ऑडिट है वगैरह. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्टफ जो होता है, लाइक एक प्लम्बर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे नॉलेज वर्कर्स की बात कर रहा हूँ. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, फैमिली डिमांड्स. आई हैव सीन मेनी हाउस होल्ड जहाँ पे अचानक पति को दिखता है कि अब उसका पेट बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है, तो पत्नी को बोलते हैं कल से मुझे ऑयल फ्री खाना चाहिए. फिर बच्चे बोलेंगे कि हमको पैनकेक चाहिए. फिर सास बोलेगी कि मुझे विदाउट शुगर चाय बनाना, पति को शुगर वाला चाय चाहिए. फिर इसका ये डिमांड, इस चीज में वो लोग पिस जाते हैं औरतें, मैंने देखा है. या एंड दिस हैज टू बी डन अवे. यहाँ पे इफ द फैमिली हैज टू कम टुगेदर एंड से कि इतने वैरायटीज नहीं बनेंगे भाई. ओके, वी कैन हैव दिस लाइक एक दिन में किसी एक का स्पेशल डिश बन सकता है, बट एवरीथिंग एवरीबॉडीज नीड्स शुड नॉट बी टेकन केयर ऑफ ओनली बाय वन पर्सन. दे हैव टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. आपको कुछ स्पेशल बनाना है तो यू हैव टू एंटर द किचन.
because then the burnout level is so high for that lady, or if you say, toxic environment create होता है, चिड़चिड़ापन होता है, it's a never ending job, and we all know it's a thankless job. मुझे याद नहीं है कि my mother is no more, but मुझे कभी याद नहीं है जब मेरी माँ ने मुझे खाना परोसा और मैंने माँ को थैंक यू बोला है। वो कभी आएगा ही नहीं मुझसे। माँ को क्या थैंक यू बोलना है, राइट? पर मैं होटल के वेटर को थैंक यू बोलता हूँ। एक्चुअली जरूरत नहीं बोलने की, वो कौन है मेरा लगता, बाद में उसको मिलूंगा नहीं। दिस इज नथिंग वेरी स्ट्रेंज, राइट? मतलब हमें इतना ईगो रहता है कि हम स्ट्रेंजर्स को थैंक यू बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, और सबसे करीब लोगों को हम सॉरी एंड थैंक यू नहीं बोल सकते हम। दिस इज शियर ईगो, राइट? और कौन सा रीजन आपको लग रहा है हो सकता है? शियर ईगो। इंटरेस्टिंग थिंग। सो इसका सॉल्यूशन क्लियरली दिया नहीं है। वो और या फिर देखो वो कौन सा मूवी था ना, उसमें आया था इन फ्रेंडशिप नो सॉरी नो थैंक यू, और इन सम रिलेशन नो सॉरी नो थैंक यू, समटाइम्स दैट आल्सो कम्स इन। मे बी, या, बट देन कभी थैंक यू से कभी कुछ उल्टा जवाब तो नहीं है ना? किसी को गुस्सा तो नहीं आया ना थैंक यू बोलने से आज तक? इम्पॉसिबल है। या सॉरी बोलने से किसी ने चाटा मारा है अब तक? किसी ने नहीं। then what's the problem in saying, right? Alright. ठीक है। सो ये इस पे क्लियर सॉल्यूशन नहीं है, इस पे हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि फैमिली डिमांड जो है which go in different different directions, and then only one person is responsible to meet all the demands is is a very bad situation. Okay, and I'm not giving a direct solution, but I'm just emphasizing and talking from that lady's point of view कि इसका इसका solution ढूंढना जरूरी है। Yeah. Now, some things that when cooperative spouses or cooperative husbands are trying to contribute, या उस वक्त क्या क्या गलतियां होती है औरतों की, ये भी मेंशन किया है इसमें कि नाउ सपोज हस्बैंड इज ट्राइंग टू हेल्प हर इन द किचन और एंड ही स्ट्रगलिंग टू डू इट, फिर औरत बोलती है, ए तू छोड़, तुझे नहीं आता है, तू कुछ भी करता है, लेट मी डू। No, this is where delegation. Let him do. Let him burn his hand. Let him burn the roti. That's absolutely fine. And then gradually, because a first timer will always make a mistake, right? A novice will always make a blunder, not a mistake, a blunder. So that's absolutely fine. But अगर आप उसमें उसी वक्त बोलोगे कि तुझे कुछ आता नहीं, छोड़ मैं करती हूँ। Now, if you're already 10 steps ahead in the race, the person says that तुझे कुछ आता नहीं है, तो the husband will get demotivated, वो छोड़ो मैं करूंगा ही नहीं, तू ही देख किचन का। सो ये भी पॉइंट है। सो ये भी जाने अनजाने में होना नहीं चाहिए। ओके, द स्ट्रगल इज रियल फॉर एवरीबॉडी, एंड मैं एंड आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कुक, एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी प्राइड टू से दिस, बिकॉज मैंने नहीं किया प्रैक्टिस उसका, एंड आई शुड बी डूइंग इट इन द किचन। In या this point, I would like to add something. या जनरली क्या होता है कि आपको अगर किसी से काम करवाना है ना, तो आपको उसकी पहले तारीफ करनी पड़ती है। वेरी सिंपल केस फॉर द किचन वर्क। अगर घर हाउस होल्ड की बात चल रही है, योर मदर इन लॉ विल से, तुम सबसे बढ़िया चाय बनाती हो, भले ही तुम पीती नहीं हो, वो तुम कुछ जानती नहीं हो, लेकिन तुम ही सबसे मतलब तारीफ कर दो, फिर तो वो जाएगा ही, बनाएगा ही। और कहीं ना कहीं फिर उसके लिए सब काम करने ही लगता है, मतलब द थिंग्स फॉल इन द प्लेस, वो चाय अच्छी भी बन जाती है बिकॉज उसमें पॉजिटिव वाइब चला गया पहले भी। राइट, इंटरेस्टिंग। सो अभी आपने पोल खोल दिए, तो कोई तारीफ करेगा तो इट्स एक्चुअली अ पिंक फ्लैग। Yeah, now comes to the most ignored part of the corporate mother is fitness. Fitness is the last thing a lady will give priority. वो कभी होता ही नहीं है. So there are some ideas where we can try to give importance to fitness is by combining kids time and your fitness time. How about finding out physical activities or games जहाँ पे आपके कैलोरीज भी बर्न होंगे और आपका बच्चा भी खुश हो जाएगा. Yeah. I've advised to many of my friends who are parents, and it has done wonders. उनका वजन भी घट गया और बच्चा भी खुश है कि चलो my mother is giving enough time to me, and there is no child in the world who doesn't like to play. In fact, childhood is equal to play. आपको खेलना है, ओके, डोंट डोंट और खेलना है मतलब जस्ट प्लेग्राउंड में जाके आप कुछ भी, यू डोंट नीड एनी फैंसी इक्विपमेंट्स, जरूरी नहीं कि क्रिकेट ही खेलना है। इनफैक्ट क्रिकेट इज द गेम
जहाँ पे लीस्ट कैलोरीज बर्न होते हैं। आधा टाइम तो हम खेलते ही नहीं है, उस पे खड़े रहते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, इट कुड बी लुका छुपी और नो ब्लाइंड फोल्ड जो बोलते हैं, एनी नॉनसेंस जहाँ पे रनिंग इज रिक्वायर्ड, हॉपिंग इज रिक्वायर्ड, या मजा मस्ती। सो फिजिकल मस्ती मैंने देखा है कि औरतें कम करती है बच्चों के साथ, और बाप लोग ज्यादा करते हैं। तो वो भी होना चाहिए कि उससे आपका आपका भी फायदा है, एंड इट्स अ गुड फैमिली टाइम। एंड एट द सेम टाइम आई वुड से दैट सी यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर बॉडी। यस, बच्चा होने के बाद you know all the bodily vital stats go on a toss, एंड देन वहां पे इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स था, अभी तो क्या, अभी तो बच्चे हो गए, अभी मेरा क्या, अभी बस मुझे मैं और मेरा परिवार और मेरे पति। ये जो सेंटेंस है ना, बड़ा गुस्सा आता है मुझे ये जब सुनता हूँ मैं बहुत लोगों से। अभी तो क्या, अभी 35 हो गया, अभी 40 हो गया, अभी क्या। एंड देन बट दे कैरी द गिल्ट of the overweight that they are carrying. Yeah. Now, come on, we all know कि no, yes, you are going to put on weight after giving birth to one or two children. So what? But at the same time, you are not defined by your body. और फिर वो क्या होता है उस गिल्ट में, नो, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ क्रिएटिव इनोवेशन इन गारमेंट्स, नो, देर इज एन एंडलेस एंडलेस क्या बोलते हैं उसको, एंडलेस डिजायर कि नहीं, ये ड्रेस में शायद मैं पतली लगूंगी, एंड देर इज नो एंड टू इट। और फिर ड्रेस के बाद ड्रेस, ड्रेस के बाद ड्रेस, नहीं ये ड्रेस में शायद मैं पतली लगूंगी। ये सिर्फ यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर बॉडी। अगर कपड़ों की वजह से अगर आपको कोई हायर कर रहा है, देन एक्चुअली इट्स अ रेड फ्लैग, राइट? इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू। सो और इट्स ओके, आपको परफेक्ट बॉडी की जरूरत है ही नहीं, हमको कहाँ जिम ट्रेनर बनना है या ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है। इट्स जस्ट अबाउट फीलिंग फीलिंग हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, राइट? फील गुड एंड लुक गुड, ऑफ कोर्स वी ऑल वांट टू लुक गुड, मैं कहा ऐसा नहीं हुआ, राइट? वी ऑल वांट टू लुक गुड, अ प्लेजेंट पर्सनालिटी, गुड डिसेंट क्लोथ्स। बट यहाँ पे सो देयर इज अ बुक कॉल्ड बॉडी इज नॉट एन apology. It's all about the bodily guilt that most of the women carry. Take the best example is Oprah Winfrey. Come on, she's so overweight, she's obese. She lost her weight like 4 times and again gained weight. Oprah Winfrey. Body is not an apology is the name of the book. I have summarized it in booklet as well. Yeah. That book will help you to change your approach towards your body and your fitness journey. Trust me. बहुत ही, इनफैक्ट इट हेल्प मी ऑल्सो। आई वॉज ओवरली ऑब्सेस्ड विथ माई फिटनेस जर्नी, कुछ ज्यादा ही मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता। नाउ डेज इट्स लाइक ओके ओके, हफ्ते में 4 बार वर्कआउट हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, दैट्स फाइन। इट्स मोर अबाउट कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस दैन परफेक्शन। या मेरे खाने के में आई बिकम क्वाइट लिबरल, और देखा कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है मेरा। या सो सो परसिस्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। या गुजराती में एक बोलते हैं मोटा मोटी, बहुत मेहनत गुजराती, मोटा मोटी मतलब अप्रोक्सीमेटली। सो एम आई अप्रोक्सीमेटली फोकसिंग ऑन माई फिटनेस इज द आंसर। आंसर शुड बी यस, अप्रोक्सीमेटली। वो आई नो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड अप्रोक्सीमेटली, कि हफ्ते में 3-4 दिन अगर मैंने कुछ फिजिकल एक्टिविटी की, नाउ इट डजंट मैटर whether you play with kids or you go to swimming or you go to the gym or you do surya namaskar or yoga or weight training, it doesn't matter at all. It's just about moving your body for adequate amount of time, that's all. And interesting thing, there is something called uh, fitness time paradox. जो टाइम आप फिटनेस पे दोगे, एक्सरसाइज में दोगे, जैसे 30 मिनट्स 45 मिनट्स, तो आपको लग रहा है कि अरे उतने तो मैं टाइम और किसी पे दूंगा मैं, और मेरी जो बाकी के काम है घर के उसमें दूंगी। बट एक्चुअली बाय इन्वेस्टिंग दोस 30 मिनट्स एवरी डे, योर प्रोडक्टिव आवर्स फॉर द वीक इंक्रीज बाय 20 आवर्स। ये प्रूव किया गया है, बिकॉज योर एनर्जी लेवल्स है ना, योर प्रोडक्टिव एनर्जी लेवल्स डबल हो जाते हैं। और ये मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ। व्हेन आई डोंट वर्क आउट, माय प्रोडक्टिविटी फॉर द डे गोज डाउन, एंड इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, इट इज साइकोलॉजिकल। मैं थोड़ा चुप चुप बैठूंगा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आई विल डू ऑल द इजी इजी जॉब्स फर्स्ट, विल पावर कम पड़ जाती है। द टफ जॉब जो पहली बार करते हो, कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ नया क्लॉज आया है वो पढ़ के फिर करना। बट व्हेन आई एम एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, आई स्वेट अ लॉट,
So, I'm like on my toes, more active, more smiling, more talking. ये ध्यान नहीं देते हम, because it can't be measured in numbers. Your mood is uplifted. Very बहुत फर्क पड़ता है इससे. Yeah. Uh, yeah, I think we have covered most of the points from these two books, Lean In and My Life in Full. Yeah, now we can, it's 4:55. Can we take up some questions, if any? Yes. So Yeah. Reeti is having two questions. So Reeti, you can unmute yourself and ask. Yeah, Ritu. So one thing I wanted to say that जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब मेरे घर में तो पापा मम्मा मैं भैया सब कुकिंग करते थे. Oh, wow. तो टचवुड आई हैव सीन दैट. ऑल्सो सर एक क्वेश्चन है, आप हमेशा कहते थे कि मतलब इफ द कुक अगर आप मतलब बुकलेट हाउस में कुक चाहे 50,000 ले ले बट शी शुड बी एबल टू मेक एवरीथिंग इन ऑल दैट. इज द जॉब ओपनिंग स्टिल ओपन? And आई एम अप फॉर इट. and jokes apart, so that point I said once, when your rich is your rich and my rich is my rich. Yeah. Richness is not defined by the society. So for me, I always had this dream कि मुझे एक healthy और tasty recipe करने वाला कोई चाहिए. Yes. So I will compromise ruthlessly on my bikes and cars, और सबसे cheapest bike लूंगा, सबसे cheapest car लूंगा, so that I save that money to spend on things which make me feel rich. Yeah. Books, healthy and tasty eating, वो point था. But no, I'm happy with my current chef. No issues. She took off. That's why I was taking a chance. Okay. Yeah, on a light note, yeah, thanks for noting this. Thank you. Others who have not switched on the camera, I would like to see you guys. So lucky that I'm the only guy in the room. All ladies. Akshara, Aditi, Hiral. Anshul is here. Anshul. One was there. Yes, Anshul. Okay, yeah. Thank you so much for switching on the camera. Anshul, yeah. Any questions? You can ask your personal process. I don't say that I have all the answers. मैं कोई सदगुरु नहीं हूँ. But no, we can always discuss on it. कि और आपके personal problem आप share करो. No problem. Yeah. Yeah. Ready? Amrut, one thing related to reading. When we want to do everything, there is reading habit. I'm sure most of us would like to do. You have read more than 1,000 books, and and I've attended your session multiple times. But when it comes to inculcating the habit, consistent habit of reading books, it is not happening. Yeah. What is your advice? Very important point. Yeah. See, 10 years ago when I started Mission Make India Read, I thought access to books is a problem. But I was wrong. See, that's why I made bus summaries free, short. So access मैंने easy कर दिया. अभी आपका क्या बहाना है? Of course, it worked. So there are like lakhs of people. But now I'm saying the bigger problem is not access to books. It is motivation to read. I think my job is there now. It's not about giving you the book summaries. चलो लो 1,000 summaries मैंने बना लिया, अभी पढ़ो या सुनो. No, it is about motivating. See, the most important things in life are never urgent. I repeat, the most important things in life are never urgent. Reading, exercise, meditation, family time, long-term reflection. Am I on the right track? Am I on the right direction in my career and family? ये सब सोचने के लिए करेंगे. Have you ever heard somebody saying, "Oh my God, मुझे अर्जेंट काम याद है, मुझे जिम जाना है"? Never. हाँ, आज नहीं गया, कल जाऊंगा. कल 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 कल. So same goes with reading. And that's why, as I said, my job is to push you. वो आपको सब करना, आपको सबको एक्सरसाइज करना, आपको सबको रीड करना है, बस एक पुश करने वाला कोई चाहिए, right? So what I'm doing here is I'm finding those motivational factors which will automatically push you to read 5 minutes a day, 10 minutes a day. And that's where IBL was born, Indian Booklet League. So fantastic concept. Thanks for asking this, Kalpana. The registrations have already started. I promise you, you will end up reading 21 books in 21 days. आप कितना कितना फाइल्स पाइल अप हुआ रहेगा, चलेगा. आपका डेडलाइन आ रहा है, 31st March आ रहा है. The dynamics are such
that you'll make sure कि चलो at least 5 minutes में वो read करके वो मुझे खत्म कर दूंगी. That is called prioritization. I'll make you, that system is such that you'll automatically prioritize reading for 5 to 10 minutes a day. I promise. और वो जब 21 दिन के बाद पीपल हैव कंप्लेन टू मी कि भाई क्यों बंद किया, अभी नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है, मैं आदत हो गई है मुझे. या सो ट्रस्ट मी, ट्राई वंस. द रजिस्ट्रेशंस हैव ओपन्ड. अभी जल्दी खत्म हो जाएंगे बिकॉज आई एम अलाउइंग ओनली 100 रीडर्स, सीरियस रीडर्स. तो जल्दी से गो टू बुकलेट ऐप एंड क्लिक ऑन आईबीएल सेक्शन एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, पार्टिसिपेट पे क्लिक करके. या कल्पना, सो दिस इज अ सॉल्यूशन Yeah. फॉर. So I've participated in first season and Oh, I'm looking. wow. Yeah. So how was your experience? Yeah. It was awesome. It was awesome. Correct. And then you get to meet like-minded people, serious readers. वो भी एक bonus है. Yeah. Anshul wants to ask. Yes, Anshul. It takes a lot of courage to ask a question in a group of Hello, audience. hello, thank you everyone for beautiful meeting. Thank you, Amrut Bhaiya, for your post on Facebook. Actually, I joined from Facebook post. Okay. Okay, and I learned a lot of things from Booklet app. And thanks for Booklet app. And I started my business Umang Upahar. And Booklet app and Amrut Bhaiya helped me a lot. He suggested me a book, The Personal MBA. And I'm not from business background. And this book and Booklet app, I started my business from WhatsApp like Amrut Bhaiya. I totally copied Amrut Bhaiya. Wow. And Super. What is your today, business? What is your business? today, my business is customized gift. And Interesting. I generally मैं कोशिश करता हूँ अमृत भैया को कोई भी सेशन छोड़ूं नहीं और उन्हें फॉलो करता रहता हूँ तो इससे बहुत ज्यादा इंसाइट मिलती है और मैंने बुक भी पढ़ी है द पर्सनल एमबीए तो उससे काफी हेल्प मिलती है और इनके आइडियाज को कॉपी करता रहता हूँ मैं भी अपने बिजनेस में. Very good. Very good. Chalo. Okay, thank you. There's a book called Steal Like an Artist. I've summarized it. So just copying की भी आर्ट अगर किसी को करना, and then he is wholeheartedly admitting it. मैं तो बोलता हूँ करो. No, nothing is original in life. Everything is an inspiration from somebody else. Yeah. अगर एंड्रॉइड ही नहीं होता तो बुकलेट ऐप नहीं होता ना. So nothing is from zero or nothing is original. Every artist has this guilt in his mind when somebody says कि आपका गाना है तो वो जो बोलता है हाँ ये पूरा मेरा गाना बना हुआ है बट ही हैज द गिल्ट कि नहीं ये थोड़ा सा ना यहाँ से लिया हूँ, थोड़ा यहाँ से लिया हूँ, मैं यहाँ से इंस्पिरेशन लिया. एवरी आर्टिस्ट डज दैट. सो थैंक्स अंशुल फॉर एक्नॉलेजिंग दिस. मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. मैं कुछ ऐसा डिजिटल गिफ्ट बनाने की कोशिश करता हूँ मतलब जैसे एआई का यूज करके मैंने एक पर्सनलाइज्ड पोएम बनाने की कोशिश की जिसमें तो वो काफी सेल भी हुआ मतलब 4-5 लोगों को मैं सेल कर चुका हूँ. तो ऐसा कुछ डिजिटल गिफ्ट हो सकता है कि मतलब इंस्टेंटली किसी को भेजा जा सके जैसे कोई दूर है फॉरेन में है या 100 किलोमीटर दूर है. अभी तो ब्लिंकिट वगैरह है जो 20 मिनट में डिलीवरी कर देते हैं पर कोई अगर गांव में है तो इस पर कुछ आइडिया हो सकता है. मतलब बुक पीडीएफ तो लोग फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं आजकल. डिस्कस करेंगे इस पे. या जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. आई वुड लव टू डिस्कस ऑन दिस आइडिया. या अंशुल. ओके, थैंक यू सर. व्हाट्सएप नंबर अगर मेरा आपके पास रहेगा, आई आल्सो शेयर्ड इट. कल्पना शेयर्ड इट इन द चैट बॉक्स. गेट इन टच विद मी. जी मैं कनेक्ट हूँ आपसे व्हाट्सएप पर. थैंक यू. ओके अंशुल, विल डिस्कस. थैंक यू एवरीवन. नाइस टू मीट यू. थैंक यू. भैया अपनी कांटेक्ट डिटेल्स दीजिए ना प्लीज. अंशुल के मेरे तो है तो कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स. हाँ अंशुल, you can draw. You got a customer here. Thank you. 9695119202 is my WhatsApp number. Just drop and it. my okay. Yeah. Yeah, Amrit, actually, my issue is something different. So, how you will have a chain smoker? I was like a chain reader. I still remember this Papillon book. It is a set of three books in one series, and I read in Kannada. It's a translated version, and I bought three books and read complete three book set in a single night, and went to the office without sleep. So that was my issue. So now what happened is I can't leave the book half read or something. So if I sit I want to complete it. I slowly reduced the reading now. So It's not an ये issue. बीमारी अच्छा है आपका. हाँ, it's not an issue. Bhai, you are the torchbearer of Mission Make India Read. This is a good habit, na? That if you're not able to leave the book half read,
It's a blessing. It's a blessing. You're not getting distracted by other attractive distractions around you. धुरंधर है and Kantara है and dance videos है. उससे अगर आप distract नहीं हो रहे हो तो it's a big asset. It's a superpower. So you should protect it. Movie and all, I feel it difficult to watch even half an hour and I'll fall asleep. But books, I will not get sleep only. I'll keep reading. Ah, lucky you then. But because, as I said earlier, I have lots of things in my plate, so I just kept it aside because if I sit and keep reading, my kids and all, they have to starve then. एक एक्सपेरिमेंट करके देखो मैंने किया था फॉर ऑल ऑफ यू सिंस शी इज डिस्कस एक्चुअली डिस्कसिंग हम कई बार आई एम वेरी श्योर आप टू डू लिस्ट बनाते होंगे या जो भी है आप लिखते होंगे ना कि ताकि काम दिमाग से छूट ना जाए तो हम कहीं ना कहीं लिखते हैं फ्रिज के ऊपर आप लगाते हो पर्ची लगाते हो ये लाना है फिर एक लिस्ट रहती है तो कैन वी ट्राई कि आज के टू डूज में देयर कांट बी मोर देन 3 एक्टिविटीज 3 ही लिखना है हाँ? ऐसा नहीं कि 10 लिखना है और फिर उसमें से 3 करना है 3 ही एक्टिविटीज है नाउ कौन से एलिमिनेट करना है आपको आपको डिसाइड करना है या सो हाउ टू डू दैट तो सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में क्या आता है डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट नाउ डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट इज अ वेरी बैड आइडिया because if it is not important then why will it become part of a to-do list, right? Everything is important. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट कि डॉक्टर का फॉलो अप करना है कुछ जाना है रिपोर्ट्स दिखाने वो भी इम्पोर्टेंट है मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है सो इफ यू आर एबल टू कट इट डाउन कि हाउ टू डू दैट हाउ टू एलिमिनेट द एक्टिविटीज फास्ट फॉरवर्ड imagine mentally that you have done that job and check your feelings. What are my feelings? अगर वो जॉब करने के बाद आई गो टू बेड will I go to bed as a satisfied person or with a sense of achievement? If the answer immediately comes yes, it's the thing you have to do today. अगर clear है yes नहीं आ रहा है just creatively procrastinate it to the next day. Procrastination is not a bad thing. पहले दिमाग में फिट करो जो सेल्फ हेल्प बुक्स ने जो ये किया है ना प्रोक्रास्टिनेशन हैज बिकम अ बैड रेपुटेशन ऐसा नहीं है यू हैव टू बी क्रिएटिव in fact I read this in Narendra Modi's book called Exam Warriors that you know काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम मुझे बाद में करना है that is his secret of productivity. It is not about doing it, it's about which one to be done now and which one to be procrastinated to the next day or next week. तो कौन सा बाद में करना है is more important than क्या करना है. Got it? So focus on this. हमको because our mind is very bad in giving different degrees of importance to all the things. उसका impact कितना है लाइफ पे ये हम तुरंत कंक्लूड नहीं कर सकते. Got it? So उसके लिए हमको ये थोड़ा छोटा मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ेगा एंड देन रूथलेसली ब्रिंग डाउन द टू डू लिस्ट टू ओनली थ्री करके देखो आपका मेंटल स्पेस इतना फ्री हो जाएगा ना यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द डे या किसी ने कुछ लिखा है कमेंट कैन यू रीड आउट ऑन अ लेटर नोट रिक्वेस्ट फ्रेंड्स टू गिव यू द गिफ्ट या आई थिंक इट्स 5:05 कल्पना कैन वी कॉल इट अ डे Yes, yes, Amrut. A final call if anyone would like to ask any question. और मैंने जो भी बोला यू डिड नॉट अग्री टू ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव सेड कुछ कुछ मैंने कुछ ज्यादा ब्लंटली बात किया होगा बस वो मेरा स्वभाव है कुछ ज्यादा ही साफ साफ बोलना एंड मे बी बीइंग अ मैन कुछ अगर मैंने कुछ कुछ लाइन क्रॉस की होगी तो आई रियली अपोलोजाइज बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल and also think not only from a man's point of view but also from a woman's point of view. Thank you so much, Amrut, for accepting our invitation so generously. And as Amrut mentioned, he instantly suggested, after hearing about our platform, he instantly suggested, let's discuss My Life in Full by Indira Nooyi. And we had couple of more many takeaways to implement in our life. My personal favorite is
segregating the week. This week will be for the kids, this week for the work. This is absolutely amazing, and I will try to implement. Another is mixing the fun time with kids and the exercise. So last year from 1st January, I'm not having a full-time help. I'm struggling to find one. And from that day, it's almost more than a year, I'm not able to focus that 1 hour of exercise that I used to have every morning. So this is something, this idea I'm going to implement, Amrit, from this week itself, and it is going to help, I'm sure. And another thing that you have shared just now, that thinking that how we will feel after completing that work. And yes, it is very important because all of us are having many things in our plate to look after, not only on professional front, but on personal front as well. And it is very important to take that judgment, kaun sa kaam abhi karna hai, and which can wait further. So thank you so much, Amrut, for all this enlightenment and also sharing about how to have that reading habit. I request all the participant present here to join the Indian um, Indian booklet league. Yeah. Indian Booklet League. It is something that will not allow you to sleep before attempting that day, six balls, six question after reading that book, that I can vouch personally. With that, we would like to present as a small token of appreciation a virtual certificate. Oh, wow. This is interesting. Thank you so much, Amrut, for sparing and giving time to our platform. It is going to really help for not only for me, but all the participant and to our platform. And we are having this session recorded. Thank So you. those, I've received couple of messages where most of the participant was not able to join live. They will follow through the recording and going to benefit from it. Sincere gratitude from the whole team of Friday Fleet. We are about to complete 100 episode on our platform, That's and we will reach out to you. Some plans are there in our mind, and we will discuss with you offline, and then we can see what best we can do, what best we can utilize your wisdom and the mammoth of information you are having, what how we can utilize for our platform. Thank you so much, Amrut. Thank you for having me. Thank you for considering me as a deserving candidate for this platform. And happy reading. Yeah. And bye bye. Thank Bye, you to all the Karuna. participants for joining and taking that one step for becoming a better version, better person. Thank you so much. Bye bye. Thank Thank you, sir. you. Bye. Bye-bye.